So today's topic typically is, why do you see in most cases that your businesses are the competition that you have is little doing better than you? Um, how many of you are facing this issue? If you could just confirm me on the chat box so that we can start working on this. And I'll tell you today what could be the elements that you need to look at so that you can surpass that competition in a good way. Okay. So quickly, let me know. Are you facing this kind of a challenge that your business today is getting heat, very strong heat from your market, and that heat is not allowing you to push forward? Okay, on your chat boxes right now, so I'm waiting for your responses. Meanwhile, while you are sharing me your challenges, I am establishing a PPT here which will help you to understand. I'm going to help you understand only one aspect today. Okay, and how that one aspect plays a major role on the entire process of you scaling the business. Okay, so where do we actually make the mistake, and how should we move out of this? Okay, you must have heard all these words that you need to have a system, process, you need to have people which probably are competent to do the job and all. And I'm sure all of you have heard this thing, right? Uh, but when it comes to competition, why does a competition? First, if you understand the science behind what is happening, then you'll be able to resolve the issue. Okay, resolve the issue. So here is the question. Uh, in any market that you have, your market, say, assuming you're making a product and you're making this mobile phone. Okay, I have a mobile phone in my hand and you're making this mobile phone. Your mobile phone typically is the market of the mobile phone is typically divided into these 5 categories of buyers. These 5 categories of buyers. The first category of buyers are people who love to have new items, new innovation, new products, new systems. The market needs to have that. Always remember, a product's journey is moving from aspiration to need. Aspiration to need. What does it mean? Basically, the quantity of people who aspire to get a product or a service, okay, and the buying behaviors of those are based on their interest and persona. Now, if it is getting too heavy for you, just let's understand this simple thing कि अगर नया प्रोडक्ट है तो उसके खरीदार कम होते हैं क्योंकि वो मार्केट में प्रूव नहीं हुआ. ओके, उसकी प्राइस भी आपको ज्यादा मिलती है. जब भी आप कोई नई चीज करते हो आपको प्राइस ज्यादा मिलती है. जैसे ही आप मार्केट में you move towards innovators, there are almost 13.5% of people who are called early adopters, जिनको रेफरेंस चाहिए. आप जब अमेजोन में कोई प्रोडक्ट देखते हो तो आप उसके रिव्यूज चेक करते हो. These are early adopters of that product. Now you have to ask yourself कि क्या मेरा प्रोडक्ट, अगर रिव्यूज नहीं है, अगर अगर मेरे पास मैंने रिव्यूज बनाए हैं क्या कि लोग उस पर भरोसा रखें, राइट? क्या मेरे पास रेफरेंस पॉइंट्स हैं? क्या मेरे पास ऐसी इंडस्ट्री का काम है? क्या मेरे पास वही लोग ये आपका माल खरीदेंगे. जब उनको रेफरेंस मिलता है तभी जाके वो माल खरीदते हैं. थर्ड इज अर्ली मेजॉरिटी. हाउ ऑल ऑफ दिस वर्क्स एंड हाउ इट इज impacting your competition, I'll share that with you. Third is your early majority. Early majority are people who have got the evidence, who know this is a good product, and they see a need. राइट फिट है, गाड़ी खराब हो गई है, गाड़ी खरीदनी है. मोबाइल खराब हो गया, मोबाइल खरीदना है. दैट्स इट. They see a need. So they are very validating in nature. They want a good product also and good price also. They want a good product and a good price. जैसे जैसे ग्राफ नीचे जाना शुरू होता है वैसे नीड बेस्ड बाइंग शुरू हो जाती है. यहाँ पे आपको बार्गेनिंग बहुत तेजी से करना पड़ता है. प्राइस ड्रिवन मार्केट होता है, बट वॉल्यूम आपका ऊपर होता है.
सो प्रोडक्ट ज्यादा बिकता है पर मार्जिन कम होता है। क्यों? क्योंकि by the time you reach the early majority, you have understood, sorry, by the time you reach late majority, you have created competition for yourself. क्योंकि लोग जब देखते हैं माल बिक रहा है तो उसे रेप्लिकेट करके कॉपी करके शुरू कर देते हैं। Now, what is the method to beat that competition? Jump the S curve. Now, this typically is called jumping the S curve. जब मैं अर्ली अडॉप्टर्स स्टेज में होता हूं कि मेरे मार्केट में से, अज्यूमिंग आई एम स्टेइंग इन पुणे राइट नाउ, in Pune, in the small, area that I say, I have a retail shop. That retail shop is now around 13% of the retail shop population. I mean, the population of that area is coming to that retail shop. Okay. It is bound to have a competition, a new retail shop. Maybe somebody else will make it for sure. So what is the job? The job is to identify this market and start working on a new product or a new innovation or a new system or a new service that will jump this S curve. It will not fall down, but it will take it up. And most of the time, if you understand, this is a management tool. This management tool is used to create products and markets. I mean, products that are innovative at the marketplace. I'm going to share certain things with you. What are the different tools you have to use to come to a decision-making point? Now, while this decision-making point is important for you, you have to make a decision to move out of this trap. This is a trap, right? How many of you are facing the issue? Please give me, please let me know on the top, on your chat box that you're facing this issue and you want to get out of this trap. Okay, I want to create a new product, but I don't know whether that product will be copied, or I don't know whether that product will work. I'll tell you all the tools today, but you got to tell me that you're facing the problem. If you're not facing the problem, let's not discuss about it. Okay, but this is one part of the job. The second part of the job when it comes to competition is what is your go-to market strategy? Okay, so we'll talk about that as well. But first, of course, we'll talk about your product creation journey. Now, I'm going to give you 4 words. Have a note, have a look at what I'm writing down on the. I'm going to give you 4 words. Okay. These 4 words will help you understand during your product creation journey, how should you make sure that your product you are able to decrease the risk. Okay. Decrease the risk. मैं आपको सारे टूल्स आज बता दूंगा कि ये कंपटीशन को क्रैक करने के लिए आपको डिसीजंस क्या लेने पड़ेंगे। मैं वो डिसीजंस, कंपटीशन तो हमेशा रहेगा, पर डिसीजंस क्या लेने पड़ेंगे। सो विल टॉक अबाउट द टूल्स। सो द फर्स्ट understanding that you have to do is the product that I'm selling, the service that I'm giving, is it mass utility? Is it a mass utility product or service? If it is not a mass utility product or service, then what are the problems? The product will die soon. What is the problem? मतलब ये जो ग्राफ मैंने दिखाया, ये ग्राफ शायद इधर पहुंचेगा ही नहीं, ये यहीं पे गिर जाएगा नीचे पे, द ब्लू लाइन, बिकॉज देयर इज नो मास इन्वॉल्व इनटू दिस प्रोडक्ट। अब कुछ लोग बोलते हैं नो वी डू कस्टमाइज सर्विस, वी डू दिस सर्विस, वी डू दैट सर्विस, बिकॉज दैट इज द ओनली वे दैट दे नो हाउ टू डू इट। Okay, a lot of engineering companies that we work with during our consulting, we find that the founder has started a product with a product because he knew about that product. That's it. He has not looked at the market. He's not seen whether it's mass. Generally हमको जवाब मिलता है बहुत मार्केट है, कितना मार्केट है मालूम नहीं है। So that's the challenge when it comes to ME businesses, including MSME businesses, right? And including some ME businesses, by the way. The product will die soon if it does not have a mass utility. Okay, ये बस ध्यान में रखना। इसका 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 एग्जाम्पल अगर आपको दे दूं तो कोई भी एफएमसीजी प्रोडक्ट पकड़ लो, ओके, जिसका मास यूटिलिटी है। आप अगर उस प्रोडक्ट सही है और मास यूटिलिटी है, सो उसका पोटेंशियल मार्केट में ज्यादा होता है। ओके, second element that you have to look while you are trying to beat your competition, okay, is
मास कॉस्टिंग है क्या? क्या मेरा प्रोडक्ट मास कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स पे बनाया हुआ है? अब मास कॉस्टिंग का प्रिंसिपल क्या है? ऑल ऑफ दैट ऑफ कोर्स आई वोंट बी एबल टू गो डीप इनटू दिस, बट आई डेफिनेटली टेल यू कि कौन सी चीजों को चेक करना है। मास कॉस्टिंग है क्या? मास कॉस्टिंग का मतलब क्या है? समाज के हर तबके के, या मेरे यूनिवर्स के हर तबके को ये प्रोडक्ट भाएगा। ओके। अब मास कॉस्टिंग लाने के लिए मास प्रोडक्शन के बारे में सोचना पड़ता है। जब तक मास प्रोडक्शन के बारे में नहीं सोचते, तब तक मास कॉस्टिंग वायबल नहीं होती। अब मास कॉस्टिंग अगर वायबल करनी है तो आपके पास प्रोजेक्शन, व्हाट इज द न्यू वर्ड दैट आई एम गिविंग यू, प्रोजेक्शन होना चाहिए कि आप लैगर्ड के टाइप ऑफ मार्केट में जाके भी आप उसमें 1 2 3 4% पैसा बनाओगे। विच मीन्स मास कॉस्टिंग needs to be planned with mass production and duration to reach there. Okay. अगर ये नहीं है, okay, you will lose the game. Again, customers will say you are expensive. Customers will say अरे हमको तो ये सस्ते में इधर मिल रहा है। Customers will say क्योंकि आपने प्राइसिंग जो है, वो प्राइसिंग आपने पर प्रोडक्ट लगा के रखी हुई है, वो शायद आपने मास कॉस्टिंग पे प्राइसिंग नहीं लगा कर। Only then you know what is your real break even point. आपने सुने होंगे ये फाइनेंशियल टर्म्स हैं, राइट? अब फाइनेंशियल टर्म्स मैं क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज दीज फाइनेंशियल टर्म्स आर बिजनेस टर्म्स। ओके। ओनली देन आई विल रीच अ ब्रेक इवन पॉइंट। नाउ एज वी मूव फॉरवर्ड, द थर्ड पीस इज कॉल्ड मास प्राइसिंग। द थर्ड पीस इज कॉल्ड मास प्राइसिंग। इसका मतलब समाज के सारे तबके में मैं अपना प्रोडक्ट उस प्राइस को बेच सकता हूं। उस प्राइस में बेच सकता हूं। मास कॉस्टिंग में और भी दो चीजें इन्वॉल्व है। एक तो क्या मैन पावर अवेलेबल है, क्या रॉ मटेरियल अवेलेबल है, तब जाके मास कॉस्टिंग निकलती है। ओके। मास प्राइसिंग में you will have to then build up and see whether you are able to build branding and marketing for all categories of इसके लिए आपको you don't have to go to anybody, you can do it yourself, or you can learn how to do that, absolutely no problems. Okay. I'm assuming that the businesses sitting in this webinar are close to 20, 25, anything about 10 crores to 100, 200 crores, right? But you can do this in-house. You should do this in-house so that you are able to always, every 2 years, you have to make sure you are doing forward integration. क्या है? Word is forward integration. And every 3 years, you have to do a backward integration. तब जाके ये backward और forward integration या lateral movement से आप business बढ़ा सकते हो। बट ये क्यों करना, ये इतना बड़ा क्यों करना, ऑल ऑफ दिस इज अ क्वेश्चन दैट यू हैव टू आंसर योरसेल्फ, एंड दैट्स एग्जैक्टली वेयर बर्निंग डिजायर कम्स इन पिक्चर। ओके। मैं कैसे करूं, बार बार जो डर लगा रहता है, आई अंडरस्टैंड दैट देयर इज बिजनेस बट आई एम नॉट एबल टू डू इट, ये क्यों हो रहा है? इज बिकॉज प्रॉबली ये डर डिसीजन मेकिंग का डर है। अगर क्लैरिटी मिले तो डिसीजन मेकिंग होगा, राइट? सो लेट्स मूव ऑन फ्रॉम मास प्राइसिंग। व्हाट इज द लास्ट पीस दैट वी हैव टू फोकस ऑन? द लास्ट पीस इज कॉल्ड अडॉप्टेबिलिटी। This is a place where great products like Tata Nano, Tata Swatch failed because they were not adopted by the marketplace. So when we say adoption at the marketplace, now remember, people do not buy products. People buy feelings through their habits. लोग आदतों के वजह से
फीलिंग्स से जो आदतें निर्माण होती हैं और आदतों से जो फीलिंग निर्माण होती है, उन प्रोडक्ट्स को ज्यादा रेजोनेट करते हैं. पीपल डोंट बाय प्रोडक्ट्स. ओके. while you are wanting and seeing here, okay, ये आदमी हमको क्या पढ़ा सकता है, you are coming here, you are not going to buy because I'm the best guy in the world. You're going to buy because if you resonate with me, only then you're going to buy. Simple as that. If you don't resonate, you will not buy, right? And that part is called adoption. That part is called adoption. So क्या मेरे पास, मैंने लिखा पढ़ाई इतनी करी हुई है कि मेरे पास लोग कैसा फील करते हैं मेरा प्रोडक्ट यूज करके या मेरी सर्विस यूज करके, और उनकी आदतें क्या हैं कि वो ऐसी फीलिंग आए उनको. ये एक प्रोडक्ट क्रिएशन की ब्यूटीफुल जर्नी होती है. सो फोर वेरी इंपॉर्टेंट आइटम्स इफ यू वांट टू बिल्ड अ मार्केट विनिंग प्रोडक्ट. Called market winning products, right? So what are the four words? Mass utility, mass costing, mass pricing, and adoptability. वापर होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए, और adoption इजी इजी होना चाहिए. और बहुत सारे प्रोडक्ट्स, लेट मी टेल यू, बहुत सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ये फोर्थ चीज पे जाके फेल हो जाते हैं. क्योंकि एज अ प्रोडक्ट क्रिएटर आई हैव कंट्रोल ओवर दिस फर्स्ट थ्री आइटम्स, utility, cost, and price. I do not have control over adaptability. And because I do not have control over adaptability, I am not able to predict what can happen in the marketplace. That prediction is called something. I'll give you a tool now of how to understand that. Okay. Let's look at this. Okay. High value, sorry, my mistake. Low value, low effort is a tool. ओके. अब इसको क्या करना है, आप इमीडिएटली आज आज के आज अभी के अभी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम विद दैट. नाउ व्हाट यू गोट टू डू इज, जिससे मेरे को पैसा कम मिलता है और मेरे को मेहनत भी कम लगती है, ऐसे कोई प्रोडक्ट्स होंगे आपके पास? मेरे को मेहनत भी कम लगती है और मेरे मेरे को एफर्ट भी, ये मेहनत पहले हो चुकी है, उसका फायदा आज मिल रहा है, एफर्ट नहीं है, पर वैल्यू भी कम है, वैल्यू भी ज्यादा नहीं देता. ओके. सो दैट्स द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ योर प्रोडक्ट्स. लो वैल्यू, हाई एफर्ट्स इज द सेकेंड कैटेगरी. पैसा कम मिलता है पर मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है उसमें. ऐसे प्रोडक्ट्स भी होते हैं, शायद वो आपका एंट्री लेवल प्रोडक्ट हो जिसमें आप कोई पैसा नहीं बनाते पर एफर्ट पूरा लगाते हैं, और वो करके आपको शायद आगे काम मिलता होगा. सो दैट्स लो एफर्ट, हाई वैल्यू, सॉरी, लो वैल्यू, हाई. देन यू हैव हाई वैल्यू, हाई एफर्ट, जिसमें मेहनत भी बहुत करनी है, जिसमें मेहनत भी बहुत करनी है और मार्जिन भी मिलता है. मेहनत भी बहुत है, मार्जिन भी मिलता है. एंड द लास्ट इज हाई वैल्यू, लो एफर्ट. जब आप अपने सारे प्रोडक्ट्स को इसमें कैटेगराइज कर देते हो, ओके, तब आपको करना क्या है एक बार समझ में आ गया. तो यहाँ पे दिस इज अ बॉक्स ऑफ, व्हाट इज दिस बॉक्स? बॉक्स ऑफ नो मनी. करना क्या होगा इसके लिए? या तो आउटसोर्स कर दो चीज को, या आपके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो से निकाल दो, क्योंकि मेहनत है ही. सो रिमूव फ्रॉम प्रोडक्ट. ओके. इफ यू रिमूव इट फ्रॉम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, आपके जो एफर्ट है वो एफर्ट आप अगर यहां डाल दो, ओके, या आप यहां डाल दो, यहाँ पे भी लो एफर्ट है ना, ये लो एफर्ट यहाँ पे डाल दो, राइट. अगर डाल देंगे तो अपने आप यू विल सी यू मूविंग फॉरवर्ड, राइट. नेक्स्ट, यहाँ पे क्या करना है? लो वैल्यू, हाई एफर्ट. जितना इसे स्टैंडर्डाइज करोगे उतना अच्छा. दिस इज कॉल्ड बॉक्स ऑफ
processes. Okay, box of process. So जितना प्रोसेस बनाओगे उतना आपका एफर्ट नीचे जाएगा, उतना आपका एफर्ट नीचे जाएगा। या तो फिर वो आप यहां पे बढ़ जाएगा, अगर एफर्ट नीचे जाने से और वैल्यू ऊपर हो रही है तो वो सीधा बॉक्स वन में आ जाएगा। नाउ कम्स हाई वैल्यू हाई एफर्ट्स, ऑटोमेट एंड स्टैंडर्ड्स। दीज आर द एक्शंस। क्योंकि ऑटोमेट और स्टैंडर्डाइज करोगे, एजुकेट, अपने एम्प्लॉयज को एडुकेट करोगे, अपने आप को एडुकेट करोगे, अपने एम्प्लॉयज को एडुकेट करोगे, तो जो हाई एफर्ट लेना पड़ता है वो लो हो जाएगा एंड हाई वैल्यू वैल्यू ऊपर रहेगी। सो ऑटोमेट, स्टैंडर्डाइज एंड एडुकेट, दीज आर थ्री एक्शन आइटम्स दैट यू हैव टू प्लान देयर। लेट्स लुक एट हाई वैल्यू एंड लो एफर्ट। Box of wealth. What is this box of wealth? Market aggressive. This is what you will market in the product. This is what you will showcase on your websites. This is how you will run your ads, or the subject that you will run your ads. This is how you will do SEO. This is where you will start showing the world that this is what we can do better. Now, if you're able to do this, if you're able to see, cut this into this, आपको दिमाग में ये बैठ जाएगा कि मास यूटिलिटी, मास कॉस्टिंग, मास प्राइसिंग और अडॉप्टेबिलिटी में यहाँ पे कौन बैठ रहा है। और जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक आप हमेशा कंपटीशन को चेस करते रहोगे, क्योंकि आप उसका उसका प्रोएक्टिवली सोच नहीं ला रहे। और जितनी हम प्रोएक्टिवली उसकी सोच लाएंगे इस तरीके से डिसीजंस लेके, right, you will be able to do better things. Now, in the same breath, what I'm going to do is I'm going to show you the last tool of this webinar. Okay, last tool of this webinar, and mind you, all these tools are used by Fortune 500 companies, and for last 11 years, I have taught MSME businesses and ME businesses to use these strategic tools to make better decisions. उसका रिजल्ट क्या हुआ है हमारे लिए? लगभग 13 से ज्यादा कंपनियां हमने लिस्ट करा दी है। 100 से ज्यादा कंपनियां 100 करोड़ का मार्क कर चुकी है। 700 कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स हम लास्ट 11 साल में पूरे कर चुके हैं। एंड देन ऑलमोस्ट 24,000 पीपल हैव बीन ट्रेन्ड, लाइक यू एंटरप्रेन्योर्स हैव बीन ट्रेन्ड बाय अस, right? So that's what we do, that's what we have been passionate about, but our job is to help you build management practices in the business that allows you to create stability and scalability. That's a simple job that we have, right? Now let's look at the last piece. The last piece is called low expertise, low potential. This is called low expertise, high potential. High expertise, high potential. High expertise, low potential. Now, if you look at this, low expertise, low potential, बताने की जरूरत नहीं है. I'm sure everybody's understood it. What has to be done with this? We have to say to this product, thank you very much for serving me. So ये बॉक्स से निकाल दो. Okay, clear cut. Low expertise, high potential. Okay, educate, plan, and execute. ओके, एडुकेट, प्लान एंड एग्जीक्यूट। क्योंकि लो एक्सपर्टीज है ना, मेरी मेरी की समझ का प्रॉब्लम है, मेरी टीम के समझ का प्रॉब्लम है, हमारी इंटरनल मार्केट में पोटेंशियल उस प्रोडक्ट का, सर्विस का, शायद हम करना नहीं जानते, राइट? सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू एडुकेट, प्लान एंड एग्जीक्यूट। हाई एक्सपर्टीज, हाई पोटेंशियल,
मार्केट एंड क्रिएट सेकेंड लाइन लीडर्स, क्योंकि एक्सपर्टीज भी हाई है और पोटेंशियल भी है। अगर कोई बंदा छोड़ के चला जाता है या आप छोड़ के चले जाते हो या कुछ भी हो जाता है, तो आपके पास एक लीडरशिप टीम है या लीडर्स हैं कि उसके बाद वाला आदमी है जो उसको पिकअप करेगा, क्योंकि एक्सपर्टीज हाई है। तो यू नीड हाई एक्सपर्टीज टू डू द जॉब। इसी वजह से बहुत सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एमएसएमई बिजनेस में मालिक खुद ही बेच रहा होता है। ओके, नाउ then is the last piece of it. The last piece of it is called high potential, high expertise and low potential. Create standards or exit the product. Okay, now if you see, this is called expertise versus potential. Expertise is in-house, potential is in the market. Value versus effort. Value is in the market, effort is in-house. Market building products. And this is called the diffusion of innovation. Okay. आप आज मतलब अगर इस वेबिनार में हो, अभी बैठ के अगर आप बस ये दो ये तीन टूल पे काम कर लें और सही मार्गदर्शन मिले, तो यू विल सी दैट इन द कमिंग 6 4 8 months you will be start the ball will start rolling. We are getting hit by the competition because it is not it is an accident. It is not an accident. It is an incident that is happening. और अगर मार्केट में है तो कंपटीशन होगा। अगर होगा और मेरे पास उसका तरीका नहीं है सॉल्व करने का, देन आई एम प्लेइंग अ गेम दैट आई एम नॉट विनिंग। आई शुड प्ले द गेम दैट आई कैन विन। ओके, सो दिस इज हाउ you have to look at your products and your competition. Okay, this is how you have to look at your products and your competition. Okay, so quickly, how many of you have liked what I've shared with you? On the chat boxes, how many of you have liked what I've shared with you? Okay, and look at what I'm trying to put across. Okay, the goal of this webinar is not to tell you some tips and tricks ki kya hoga. The goal is to tell you that there's a science to this. Okay, adopt that science as fast as possible. Okay, and start using that science. Okay, just by giving a tool, just by giving okay आपको चार bonuses and पांच bonuses, all of that we don't do all of that. We are very very clear. We are helping you to build science that requires management practices in the business. अब ये management practices अगर आप build कर देते हो अपनी system में, you will see that you are able to scale much faster. I'm going to show you a data right now, okay, that of how we've been able to contribute and what we've been able to contribute to various businesses. यही सारी companies, okay, यही सारी companies. This is a solar company, 18 crores to 242 crores. Anand Defense, 5 to 50 crores in 45 months. मैं जानबूझ ये आप गूगल कर सकते हो सारे नाम। आप इन कंपनियों में फोन कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि यार आपके कंसल्टिंग पार्टनर्स एसआईएल थे क्या, ऑल ऑफ दैट। ओके, इंटीग्रल टेक्नोलॉजीज, ट्रेड ऑटोमेशन, वरद ऑटोमेशंस, डाइफ, वेंचर स्टील्स, गार्डन नीड, नीरा वैली, Sachi, M Square, Siddhivinayak, around 12 companies out of this are already gone to or in listing right now. Okay, Neologic, BS Projects, Varad, So What, Oza, Vivanta, Basil, Taj Logistics. So these are various sectors. Basically, हम करते क्या हैं? Okay, हम सक्सेसफुल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बिल्ड करते हैं आपकी कंपनी में और एक रोड मैप के साथ एक सटीक टीम की तरह आपके साथ काम करते हैं हाथ लग के और एंड देन वी स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड। फंडामेंटली दिस प्रोसेस स्टार्ट्स विथ अंडरस्टैंडिंग the values first of the business, the mission of the business, the vision of the business. This is what I do in the first 6 days that you meet me digitally. Okay, I help you build the values, vision, and mission of the company. I also help you build a macro plan on the strategy.
It takes around 3 months to build a deep, robust strategic plan. Okay. But you at least get exposed to what a strategic plan is. Once these 4 things are done, then we look at, this is not in the program, but during a consulting process, our consultants who work with you in your company, these are not digital guys, they're sitting inside your company, working along with you, right? We set the goals every 90 days. We set milestones. We build your team. We hire for you. We make sure that we are in the hiring process. Business pe dhyan hai, finances pe dhyan hai, and all of that, right? We build unique projects, separate projects, because attention वहां पे जाना चाहिए जहां पे डेटा ये कह रहा है कि यहाँ पे improvement की जरूरत है. So build internal projects for you. We build the processes for you. It's called the governance book. It's called the do's and don'ts, the philosophy and the values, and more importantly, the SOB book of the company. This is in the consulting part of it. In the first 3 days, as I said, we help you build purpose, your dynamic destination, and your organization method to win in all the 10 parameters. People, process, operation, finance, ये सब का प्लानिंग पहले 6 दिन में मैक्रो लेवल पे कर लेते हैं कि इतना तो करना ही पड़ेगा टाइप्स, right? We freeze the numbers, we freeze the mission, we freeze the values. Okay? How many of you would want to do this first? And then probably explore what actually is consulting, because most of the time people have messed around with the and all you, because सब चीज के लिए market है ना, you realize the diffusion of innovation curve is saying सब लोगों के लिए market है. So everybody is choosing the market and working. We have chosen for the last 11 years. SAL has chosen to handhold people, work with them, get into the job and get the job done. Okay. Now, very importantly, once we do this, we start building the systems. We apply budgets for everybody. And then we look at these 7 parameters of success. Okay. Volume बढ़ा क्या धंधे का? COGS कम हुआ क्या? Pricing मिल रही है क्या? Cost कम हुआ क्या? Receivable control में है क्या? Debtors कितने हैं? Creditors कैसे चल रहे हैं? This is how we calculate success. This is how we calculate success. So success is calculated in mathematics, but the journey starts with right emotions. Okay. So how many of you would want to be a part of a program that I do called Burning Desire? It's a 6 days online course, live with me. We can have conversations. There's also every month there's a follow-up session, and on 13th of August, we will also meet physically in a full-day conference. Okay, where I'll tell you how all of this needs to be cascaded to your team, how your teams need to understand it, how will we work on that. So all of this is the cascading thing, right? So how many of you would want to be a part of this beautiful journey? First 6 days digitally with me, and every month around we will be sitting together, and then we will also have our conference there. So people who are interested, I do not talk like a motivation guru. A lot of people say that I am very, very flat in my conversation. But I think I make sense when it comes to data, analytics, strategies. That's exactly why people hire School of Inspirational Leadership. Personally, I get hired because I'm able to solve big problems. And if you see a problem that you're not able to solve, the God has given me enough opportunities so that I have witnessed these similar problems in the market and able to solve it. In the last 11 years, in so many industries, with so many consulting projects, we know deep roots of what things can be changed. Okay. I am not sure whether you know my basic education. I'm a psychologist by education. I passed out of Stanford University. In the first 11 years of my corporate high-flying job, I did a lot of work and product and process and sales and marketing and all that. And more importantly, for last 11 years, I've been researching, writing papers, writing books on how management practices need to be improved in the MSME segment.
I welcome all of you for Burning Desire. The next batch is just about to start in. I think this will be my 350th batch. So if you feel that I can resonate with this man, I think he's making sense. Join in and experience how structurally you can really grow your business without having. You don't need to be serious while doing it. You just need to be sincerely doing the actions that are required to be done. I thank all of you for being a part of this fantastic webinar.